Hey friends, today's topic is how to trade engulfing. Before going ahead with the topic, please subscribe to my channel so that I can share you with the kind of good stuffs in the world of trading. So this is one of the basic patterns engulfing, and today's topic is going to be interesting one. We'll see it also with an example, the theory part. So let's not wait further and let's start the discussion here. So, how to trade engulfing is the today's topic. Before that, going ahead, this is a disclaimer for you. I am not a SEBI registered analyst. All posts are for educational purposes, non-advisory or discretional. No claims or rights reserved here. I am not responsible for your profit and losses. Please consult your financial advisor before investing. So, what is engulfing? Engulfing ऐसा है कि in the market there are the situations where after uptrend new conditions happens which then reverse the trend. तो engulfing decide करता है कि उसके बाद आपका ट्रेंड डाउन ट्रेंड में जाएगा या अप ट्रेंड में जाएगा. So there are two kind of engulfing. One is bullish and दूसरा bearish. Bullish engulfing में at the end of downtrend, new candle, green candle happens as it can be seen in the chart. जहाँ पे red candle is getting engulfed by the body part of the green candle. मतलब green candle के बीच में पूरी की पूरी previous red candle आ चुकी, समा चुकी. That's why it is called to be a bullish engulfing. In case of bearish, it is vice versa. यहाँ पे at the end of uptrend you'll see one red candle happens जो कि उसके previous green candle को पूरा engulf कर चुकी है, खा चुकी है. That's what it is called as a bearish engulfing. Now, what are the different conditions or interpretation in the market where we can see such kind of conditions? तो bullish engulfing कहाँ दिखता है? वो at the end of the bearish trend or the down trend it has been seen, and vice versa is the case with the bearish one. Bearish engulfing दिखता है at the end of the uptrend. इसमें क्या क्या conditions we have to see? That the first candle for bullish engulfing is the red, the second candle is a green, and the body part of the green candle should uh, uh, engulf the whole part of whole previous candle, that is a red one. And bearish engulfing में क्या होना चाहिए? पहला कैंडल ग्रीन होना चाहिए, दूसरा कैंडल रेड होना चाहिए, एंड तीसरा कैंडल जो है वो सॉरी तीसरी कंडीशन जो है वो सेकेंड प्रीवियस वाली कैंडल को पूरा का पूरा निगल जानी चाहिए. सो दीज आर द डिफरेंट कंडीशंस. नाउ हम इसको ट्रेड कैसे करेंगे? नाउ कम्स द इंटरेस्टिंग टॉपिक. सो बुलिश एंगल्फिंग को ट्रेड करने के लिए एज कैन बी सीन इन द स्लाइड, दैट इज कांस्टेंट डाउन ट्रेंड एंड देन रेड कैंडल हैपेंस एंड उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनता है जो कि रेड कैंडल को खा जाता है. यू कैन सी बाय डॉटेड ब्लू लाइन जो कि बॉडी पार्ट है ग्रीन कैंडल का जो प्रीवियस रेड कैंडल को खा जाता है. इन दिस सिनारियो हमें ईपी और पीवी डिफाइन करने हैं. ईपी क्या है? ईपी इज अ हाई एंड लो मार्क्ड आउट ऑफ द ग्रीन कैंडल, उसका मिड पॉइंट इज अ ईपी पॉइंट. और पीवी है हाई एंड लो का बीच का प्राइस वैल्यू, दैट इज हाई माइनस लो. तो जो हाई माइनस लो को अगर हम पीवी बोलते हैं तो पीवी इज द सेट टारगेट फ्रॉम पॉइंट ऑफ ईपी. तो ईपी से एक पी प्लस पीवी करेंगे तो टारगेट वन दिखता है, एंड अगेन टारगेट टू विल बी टारगेट वन प्लस वन मूव ऑफ द पीवी अगेन. और यहाँ पे स्टॉप लॉस हम क्या रखेंगे? स्टॉप लॉस शुड बी द लो ऑफ द ग्रीन कैंडल -1%. सो दिस इज हाउ द बुलिश एंगल्फिंग कैन बी ट्रेडेड. नाउ विल सी द कंडीशन फॉर बेरिश एंगल्फिंग ट्रेडिंग. जहाँ पे एक अप ट्रेंड के बाद एक ग्रीन कैंडल के पीछे एक बड़ी सी रेड कैंडल बनती है. रेड कैंडल का जो बॉडी है वो पूरी की पूरी ग्रीन कैंडल को खा जाता है. इसको बोलते हैं बेरिश एंगल्फिंग. बेरिश एंगल्फिंग में हमें ईपी और पीवी डिफाइन करना है. हाउ द ईपी इज डिफाइंड? EP is defined as the mark out high and low of the red candle and then divided by 2. Here EP is high plus low by 2, and PV is the range between high and low, that is high minus low. So PV is the target area that we have to move from EP. यहाँ पे क्योंकि हम सेलिंग कर रहे हैं तो EP से नीचे की ओर टारगेट बनेगा. तो टारगेट वन विल बी EP minus PV and target 2 will be target 1 minus PV.
सो उसमें स्टॉप लॉस कैसे रहेगा? हाई ऑफ द रेड कैंडल के ऊपर 1% का स्टॉप लॉस रहेगा. दिस इज हाउ वी कैन trade the bearish engulfing. Now comes the practical examples of today. I will take a couple of example of both bearish and bullish engulfing. To start with, today's bullish engulfing example is of Geo Finance and how it can be seen in the chart. Let's see through the chart. Here is a in front of you. You can see the Geo Finance chart. यहाँ पे एक कांस्टेंट डाउन ट्रेंड के बाद there is one red candle getting engulfed by this green candle. This is how the bullish engulfing occurs. So conditions are what in bullish engulfing? There is a constant downtrend. Downtrend के बाद रेड कैंडल को एक बुलिश एंगल्फिंग या तो ब्लू ग्रीन कैंडल उसको एंगल्फ कर जाती है. यहाँ ध्यान से देखो कि जो ग्रीन कैंडल है उसके बॉडी पार्ट के भीतर आपकी रेड कैंडल पूरी की पूरी आ चुकी है. उसका वीक भी इसके अंदर आना चाहिए. In case of previous scenario, here also you can see that somewhat the condition was about uh, for the bullish engulfing. पर यहाँ पर एक चीज है कि जो रेड कैंडल है उसका लो जो है वो यहाँ के ग्रीन कैंडल के बॉडी पार्ट के अंदर नहीं है. That's why it is not a valid condition. So to have a proper condition about the engulfing, this is what it happens. यहाँ पे मिड पॉइंट या तो ईपी का मिड पॉइंट डिफाइन करने के लिए दिस इज व्हाट हाई प्लस लो बाय 2. दिस इज द ब्लू लाइन विच इज मार्क. यहाँ पे हाई प्लस लो बाय 2 जो लाइन है ब्लू लाइन से मिड पॉइंट लाइन मार्क आउट किया है. और पीवी क्या है? पीवी इज द हाई माइनस लो. तो हाई माइनस लो का ये जो रेंज है हमने पीवी की तरह डिफाइन किया है. और पीवी मतलब टारगेट कहाँ से होगा? तो जो मिड पॉइंट है वहां से एक टारगेट 1 डिफाइन होगा. अगेन टारगेट 2 विल बी one step ahead from mid target 1 to target 2 is the this range that we have marked out. स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा? स्टॉप लॉस ये ग्रीन कैंडल के 1% नीचे का स्टॉप लॉस रहेगा. So this is how the Geo Finance can be traded in case the bullish engulfing happens. Now we'll see the further chart on to the scenario for the next mm, uh, example. Here in the CG power, it is a current running bullish engulfing over here, and we'll see same on the chart. How will it look like on the chart? Let's see through the detailing. And before I'm sharing you the chart along with the details right now, please let me know if you are liking it or not, and let me know how can I improve my conditions over here for charting and explaining you the details. And if there are any other topics that I need to cover, also let me know so that I can make you understand the good things. Now coming in front of you, the CG power chart. As you can see on the chart, here we have again the condition of bullish engulfing. What it is, there is a constant downtrend. After a downtrend, a red candle is getting engulfed by the body part of whole green candle. Here, green candle engulfs the red one. So it is a matching condition. Now, what is a pivotal point or PV? It is a pivotal point is a high and low का जो valuation है वो pivotal point है. यहाँ पे low यहाँ पे marked है. So this is a PV point. And what is EP? Here EP is a midpoint of the this whole green candle. So this is a midpoint marked, and the target is defined from the EP level to the pivot point. So EP plus PV is one first target, and the PV again target 1 plus EP is the second target. What is the stop loss here? 1% below the week of this green candle is a stop loss pricing. This is an engulfing example with a chart. So on the bullish engulfing, we'll see now the bearish engulfing. The bearish engulfing happened in the Dr. Reddy scenario. We'll see Dr. Reddy chart and we'll see how the formation has happened in case of bearish engulfing. Here you can see the chart of Dr. Reddy in front of you with a bearish engulfing conditions. How it looks like, let me tell you while explaining the same on the chart. So in front of you there is chart of Dr. Reddy, and you can see here this Dr. Reddy chart how the bearish engulfing condition happens.
बेरिश एंगल्फिंग कैसे होता है? एक अप कांस्टेंट अप मूव के बाद एक ग्रीन कैंडल जो है वो रेड कैंडल उसके बाद बनती है जो उसको खा जाती है. So again, it is happening at the end of uptrend, and it the red candle engulfs the green candle. So this is what here happening. And again, the midpoint is defined as the high minus low by 2 as a midpoint, from where we need to move out the target. So what is a target here? This is a pivotal point PV plus movement from high to low. That is one target. This is the target one, and this is target two. And you can see easily the target has been achieved. Here, stop loss will be 1% higher than the closing red candle. So, engulfing candle के ऊपर 1% का एक stop loss रख सकते हैं. This is how Dr. Reddy can be traded for purpose of considering this engulfing. Now, coming down to another chart. Another chart is of example is of Hindustan Aeronautics Limited. This chart has given a huge amount to me, and also a kind of scenario which has generated on the chart we can see in the screen. So here how the HIL current engulfing worked and how it is showing, let me show you in the chart. So you can see in front of you the Hindustan Aeronautics chart. Again, what are the conditions to meet for constant engulfing conditions? What are the engulfing conditions? There is a uptrend. At the end of uptrend, red candle engulfs the blue one. As you can see, the red candle body part contains whole of the green candle. So these conditions are must. अगर कोई सा भी अगर ये वीक उस रेड कैंडल के बॉडी पार्ट के बाहर क्लोज हुआ, it is not a valid condition. Here it is a valid condition. And what are the conditions after engulfing? We have to define stop loss, target 1 and target 2. As you can see, यहाँ पर जो midpoint defined, midpoint line, it is high plus low by 2 is a midpoint. यहाँ से midpoint से एक pivotal point EP नीचे, ये EP is a high minus low. This is the range of price that has to be moved from the midpoint. So this is target 1 defined. Again, this is target 2 defined. As you can see on the chart, both the targets are achieved, and this is how we can define the targets of bearish engulfing. अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा या समझ आया, and if you find it useful, please do subscribe to my channel for such more content, and I will be more than happy to share with you a kind of recordings further. Stay tuned, stay wealthy, stay happy, and be profitable in the market.